Hello everyone, welcome to this channel. Today in this video I will teach you Vedic civilization. Before starting this video, one request to you all. Also keep subscribe this channel for getting instant notification when I will upload any videos. So let's start the video. The Vedic civilization categorized in two parts. First, early Vedic or Rig Vedic. Vedic civilization start from 15th BC to 6th BC. ठीक है. Early Vedic first and second is later Vedic. Early Vedic start from 15th BC to 10th century BC and later Vedic start from 10th century BC to 6th century BC. Okay. Now we discuss early Vedic in detail. Early Vedic also called Rig Vedic. In early Vedic, Aryan came to India from Central Asia and developed civilization. जब वो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए तो उन्होंने सिविलाइजेशन को स्टार्ट किया. वही सिविलाइजेशन कहलाई हमारी वैदिक सिविलाइजेशन. आई विल एक्सप्लेन इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, सो डोंट वरी अबाउट इट. आई विल एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इजिली. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेटलमेंट इन इंडिया at Sapt Sindhva is a very important point. First settlement of India at Sapt Sindhva in Vedic civilization. What was the livelihood of that civilization? Pastoral means hunting and demonstration of cows. वो cows को hunt करते थे और उस समय उस पर ही अपनी लाइफ को आश्रित रखते थे. मोस्ट ऑफ वार फाउट फॉर काउज. वो काउज के लिए ही, गायों के लिए लड़ते थे. ठीक है. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है बैटल ऑफ 10 किंग्स या 10 राजन वार. तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं. जो आपका फाइट हुआ था, फाउट एट परशुनी रिवर. जो परशुनी रिवर है कहाँ पे, रावी जो रिवर है उसके पास है, उसको परसुनी भी कहा जाता था. भरत वाज किंग हु वोन द बैटल. जो भरत थे वो इस बैटल को जीते थे. आर्यंस डिस्कवर आयरन एंड स्टार्टेड यूज्ड. अब उन्होंने जब आयरन का खोज किया, दे डिस्कवर आयरन, देन उन्होंने क्या यूज किया आयरन का. आयरन से उन्होंने क्लियर फॉरेस्ट. अब देन आफ्टर क्लियरिंग फॉरेस्ट दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर. अब वहाँ पे एग्रीकल्चर होने लगा तो वहाँ पे फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ विलेज हुआ. देन इसका मतलब है कि उन्होंने आयरन का आविष्कार किया. देन उन्होंने उस आयरन से फॉरेस्ट को क्लीन किया और एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया. और उसके बाद वहाँ पे जब एग्रीकल्चर, उनको फूड और वाटर दोनों मिल गया तो वहाँ पे उन्होंने एक विलेज को स्टार्ट कर लिया. The first social system known as Varna system. Varna based on the profession or occupation of. There are 4 Varna systems. Let's discuss one by one. First is Brahmin. Brahmin works. Their work was study or being praised. Brahmin is a super category in 4 systems. Then second was Kshatri. Kshatri works as a ruler and administrations. And third one was do trade and agriculture. Last one is Sudra is work as service. ब्राह्मण जो थे वो उनको स्टडी और प्रेस्ट के रूप में ही काम कर सकते थे. उनको वो इन चीज़ों के लिए चूज किया गया था. ये सुपीरियर माने जाते थे. छत्री को रूलर और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जितने भी काम होते थे उसमें वाली छत्री को सेलेक्ट लिया जाता था. और वैश्य को ट्रेड और एग्रीकल्चर का रूप वर्क दिया गया था, क्षुद्र को सर्विस का. दैट टाइम मैरिज एलिजिबल एज 16 ईयर्स. पॉलीगेमी मैरिज परमिटेड था उस समय. देयर आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स. कौन कौन? इंद्रा, अग्नि एंड वर्णा. दे वर्शिप 3 गॉड्स, इंद्रा, अग्नि एंड वर्णा. Now let's discuss about political system of early Vedic. Village assembly established. There were 4 village assemblies. First one is Sabha. Sabha is attended by earlier members. जो भी earlier member होते थे वो सभा को वही अटेंड करते थे. समिति, विधाता एंड गाना. Samiti, Vidhata, Gana attended by all members, but in Gana system
women are not allowed. And one more important thing, in early Vedic, status given to men and women are equal. This is very important topics in this civilization, because later in later Vedic the woman status is reduces. So it will be maybe this point may be important for regarding your exam. So keep in mind. Now discuss about the later Vedic. In later Vedic, child marriage started. Women's importance reduces. Two form of marriage developed. First one is dharma marriage, permitted by society. Second one is adharma marriage, not permitted by society. These are four types: dharma and adharma, but no necessary to memorize that all four types, because regarding your exam is not important, so that's why I'm not written here. Next is, in later Vedic, varnashram dharma developed or came in 4 stages of life. Varnashram is also called as 4 stages of life that time. First being brahmacharya, second grihastha, third one is vanprasth, and fourth one is sannyas. So these 4 life of stage is important. So you have to memorize 4 stages. Now comes on very important topic, Vedas. There were 4 Vedas. First one is Rig Veda. You also know that Rig Veda is very oldest Veda. In Rig Veda, it is divided into 10 chapters or mandals. First chapter 2 to 7 known as family Vedas or original Vedas. Chapter 3 is having Gayatri month dedicated to Savitri. This is most important point in Rig Veda. Chapter 9 contains Nadi Sutri. Nadi Sutra means praise of river. The most important river that time in this Ved, Indus. The secret, if anybody asks the secret most important river, that called Saraswati. So this is about important points in Rig Veda. Now next to move Yajurved. The second way, Yajurved divided into 2 parts, Krishna and Shukla. ठीक है. In Yajurved contains all sacrifice formula. जो all sacrifice formula था, जिसको हम बलि का formula बोलते हैं, बलि का जो सिस्टम चला था वो यजुर्वेद में था. वहाँ पे रिचुअल्स भी थी. It was sung by अधर्यु प्रेष्ठ थे, उन्होंने इसको गाया था, संग किया था. ठीक है. Now the third Veda is Samved. In Samved, very important topic, important points are origin of Indian music. इंडियन म्यूजिक का जो ओरिजिन स्टार्टेड हुआ था सामवेद में हुआ था, इसलिए इसको ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक भी कहा गया. इट वाज संग बाय उदगास्त्री प्रेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट वेदास इज अथर्व वेदास. ठीक है. यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी देख लेते हैं. इट आल्सो नोन एज ब्लैक वेदास. ब्लैक वेदा क्यों नाम से जाना गया? क्योंकि ब्लैक मैजिक, जितने भी ब्लैक मैजिक थे अथर्ववेद में स्टार्ट हुआ था. ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो यू हैव टू नो अथर्ववेदा आल्सो नोन एज ब्लैक वेदास. ऑल मैजिकल फॉर्मूलाज is in this Vedas. That's why called black Vedas. Indian medicine, Ayurveda is mentioned in Atharved. It was sung by Brahmins. So this is the end of this video. But one question for you all. You must answer this question because this question is very important. Satyameva Jayate is taken from which Upanishad? We have to answer. Later I will give answer in pin comment. So you can match from there. Thank you so much. Keep watching this.